Hello everyone, welcome to our communication conference. I'm Diksha Sekhri, Architect Social Impact of Royal Rajasthan Foundation and your host for today. To my left is Kumar Sangakkara, Director of Cricket, Rajasthan Royals. Next to him is Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, Honorable Cabinet Minister, Industry and Commerce, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports Department, Government of Rajasthan. Mr. Ranjit Barthakur, Chairperson Rajasthan Royals, and Mr. J. Klush Makram, CEO Rajasthan Royals, and esteemed members of the press, welcome. As you know, the Royals start their campaign on 24th March against Lucknow Super Giants at the iconic Savai Mansingh Stadium, and the stadium is now getting ready to host the matches as we welcome back our fans for what will be a really exciting season. We've gathered here today to talk about the upcoming IPL season, of course, and we also have a very special announcement to make. So to start off, Mr. Barthakur, how are you looking forward to the IPL season this time? नमस्कार सबको, स्वागतम। मैं तो 18 साल हो गया, 16 years यहाँ से रहा हूँ from 2008 to यहाँ। आप लोग का अंकल, आप लोग का पेरेंट्स का जनरेशन से अभी आप लोग आ गया, अभी ऐसा जनरेशन हो गया, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी आपसे मिलेगा। इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ जब तक ये सब राजस्थान में हम लोग फिर ट्रॉफी ना लेकर आए। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बहुत खुशी हूँ कि ये बोलना पड़ेगा कि हम लोग इस टाइम राजस्थान में आया और बहुत ही स्पेक्यूलेशन था, आएगा नहीं आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, किंतु हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिविजुअली राठौर साहब ने हमको जो वेलकम दिया और हमको जो ब्लैंक चेक दिया सब काम करने के लिए, इसे स्मूथली बहुत दिन के बाद, मैं तो बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट सीजन में किसी को जानकारी नहीं था, तो फर्स्ट सीजन में हम लोग जो भी किया वो बोलता था एकदम फर्स्ट क्लास है। उसका बीच में ऊपर नीचे आप लोग को तो सब मालूम है। तो इस टाइम में फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर हैविंग given us a welcome, which is fantastic. We feel very happy sort of to be here. We've got one of the greatest sportsmen in the form of Mr. Sangakkara. We also have one of the greatest sportsmen in the form of Rathore sir. So I'm saying it is very important that for the first time we're sitting on the stage with people, the greatest sportsmen. हम लोग तो सूत्रधार है, तो हम लोग खाली मैच बनाना है, तो we are nobody actually. ये लोग ही तो मैच बनाता है, एक तो स्टेडियम देता है, एक खिलाड़ी को खिलाते हैं, तो वी आर वेरी sort of relaxed and sort of happy. और हम लोग आगे देखने में, if we look forward, we think that we need to create better infrastructure. मैं तो सबको बोलता हूँ पहला से, why in Rajasthan there is no good infrastructure? ये स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बनाने के लिए आप लोग प्रेस में लिखा करो ना कि जो अच्छा होगा नहीं होगा, प्रेस में पॉजिटिव लिखा करो। ये नेगेटिव नहीं है बोल के बोलने से क्या फायदा है, क्या करना है आप आगे बढ़िए। तो मैं सोचता हूँ राठौर साहब का साथ, मैं सोचता हूँ राठौर साहब का साथ और आप लोग का साथ मिलके लेट अस मेक द बेस्ट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मैं तो ये नहीं सोचता हूँ कि ये छोटा से, अभी हम एक दो जगह इंडिया में जाते हो तो वी फाइंड दैट इट्स फैंटास्टिक। यू गो टू दुबई, सब बोलता है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, वहाँ तो इंडिया का उससे भी ज़्यादा पावर है ना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इज बेसिक नीड, और हमारा जो स्पोर्ट्समैन है ये लीडरशिप पोजीशन में है, ये लोग अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा स्पोर्ट्स। तो मैं तो राजस्थान रॉयल्स के साइड में we are making a commitment to support the best ecosystem in the world. Excuse me,
if they question, can we ask them later? Just, we need some silence there. Huh? That if there are some them to us, because we are very keen to make the best ecosystem, and we have the opportunity today to do it. We are there. We've got good leadership. We've got sportsmen as leaders. So we look forward to working together to create this ecosystem. So welcome to all of you to IPL 2024. It's, I think, the 18th edition of IPL. Am I right? Does anybody know what edition it is? It's crazy. Huh? Okay, 17. Okay, 17th edition. Even I have forgotten. Sorry. So anyway, welcome to this. We look forward to your cooperation. We look forward to working with you. We look forward to your support. Please encourage young people. Please be supportive of the global sportsmen. And welcome once again to Sports Minister. Welcome to Kumar. Thank you all for short notice agreeing to do this. So good luck and good wishes for this season. Thank you. Thank you, Mr. Bhajanlalsharma. With those wonderful words, just a little bit about him. He's a retired Army officer and has won over 25 international medals at various championships for double trap shooting, including India's first medal in shooting at the 2004 Summer Olympics in Athens. He's the first Indian post-independence to win an individual silver at the Olympics. He's now helping India discover new and young talents, much like the Royals franchise, having also played a major part in the Khelo India Games initiative that stresses on the importance of investing in sports at the grassroots level. He also launched the Target Olympic Podium Scheme, which has given athletes the required support to focus on their sport and has turned out to be so effective. Welcome again, sir. So same question for you. I mean, this is the first time we're working in this fashion. How are you looking forward to the upcoming season and working with the Royals? देखिए, खेलों के अंदर जो लीग्स हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, खेलों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। क्रिकेट लीग से ये सारी लीग शुरू हुए हैं, तो हमारे लिए राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि आईपीएल बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट हो। हमारी सरकार आईपीएल को कंडक्ट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वी आर टोटली कमिटेड टू अ फैंटास्टिक आईपीएल, द बेस्ट आईपीएल एवर। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस बार खास तौर से बीसीसीआई ने ये जिम्मेदारी परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार को कहा कि हम इसमें राजस्थान रॉयल्स की मदद करें इसको कंडक्ट करने के लिए। इसका एक ऑफिशियल कमिटमेंट भी हो गया है, लेकिन क्योंकि इस बार सरकार कर रही है, या मैं कहूं कि पहली बार जो एसएमएस स्टेडियम इस्तेमाल होता है, हर बार होता है, लेकिन पहली बार एक पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज कर, ये पिछली बार से या पिछली जितनी भी बार हैं जो 17 एडिशन हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना, मेरे ख्याल से 300-400% ज्यादा है। तो राजस्थान रॉयल्स का भी कमिटमेंट है कि खेलों को बढ़ावा दें। हमारा पूरा कमिटमेंट है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज होती है तो उससे पब्लिक का, और पब्लिक मतलब खिलाड़ियों का, पूरा लाभ मिलना चाहिए। और उसी के साथ हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ और भी कई
अंडरस्टैंडिंग्स करी है, वो रंजीत जी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन कमिंग बैक, जो अभी प्रश्न मुझसे पूछा गया, तो इस बार हम कंडक्ट करेंगे, आईपीएल को मदद करेंगे, राजस्थान रॉयल्स को कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसमें, जो जिम्मेदारी हमें बीसीसीआई ने दी है। खासतौर से इस बार हर खेल को देखने के लिए जितने भी यूथ हैं, जूनियर्स, सब जूनियर्स, उनके लिए स्टेडियम में अलग से जगह रिजर्व होगी, जो पहले नहीं होती थी। हम अभी से जितने भी पहले भूतपूर्व कप्तान होते थे, जिन्होंने राजस्थान को लीड करा, उनको वीआईपी की तरह उस बॉक्स में हम बिठाएंगे, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम कुमार यहां पर आए हैं, तो हम इनका जो हुनर है, इनका जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस दैट कुमार हैज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड. He will not only be obviously leading and teaching Rajasthan Royals, but he will also be kind enough to mentor the Rajasthan Ranji team. हम राजस्थान की रणजी टीम को कुमार साहब के साथ बिठाएंगे ताकि वो उनको काफी कुछ सिखा सके। राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में आने से, राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में खेलने से न केवल हमारा मान बढ़ता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है जब ये जीतते हैं, पूरे राजस्थान के हर एक नागरिक का पूरा समर्थन राजस्थान रॉयल्स को रहेगा। बट इस प्यार और इस स्नेह और इस राजस्थान की जनता के आशीर्वाद के लिए राजस्थान रॉयल्स भी पूरी तरह से कमिटेड हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। एंड फैंस में बहुत एक्साइटमेंट भी है इस बार जयपुर के लिए। मिस्टर बाठाकर, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन सर ने ऑलरेडी इस पे टच अपॉन किया है, बट हाउ वुड यू से अ टूर्नामेंट लाइक द आईपीएल कैन बेनिफिट द ओवरऑल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम इन द स्टेट? Thank you very much for passing the ball, Ranjit. But first of all, I just want to say what a privilege it is to meet Colonel Rajyavardhan Singh Rathore. Cricket is basically played by 12 main countries at the moment. Of course, cricket is very popular around the world, but when it comes to an Olympian, it is almost every country in the world that takes part, and you're competing with the best across such a large multitude of sports persons. As my father always reminded me when I was young, playing World Cups and everything is very good, but the pinnacle of sport will always remain the Olympics. So to meet an Olympian, a medalist, and what struck me when I spoke to the Honourable Minister was that he has also spent a life of true service, first in the military, which is one of the highest forms of service, then serving the country in terms of a sporting career, and now in terms of politics and social service. So it's a great privilege to meet you, sir. In terms of answering the question, my Sri Lankan upbringing has allowed me to see how sport in the social context that I grew up in impacted society. The Sri Lankan team at the time was a micro-representation of what an ideal Sri Lanka should be, an inspiration to all ethnicities, religions, social backgrounds, all peoples of Sri Lanka, whichever part of the country you came from. And from then onwards, in terms of cricketing success and the knock-on effect in terms of the social impact that it's had in terms of motivating younger children to take up this sport and think of it as a career, the effect on their fitness, on their thinking, their aspirations, in terms of the ability of the sport to give back to society, and of course in terms of the knock-on effect of developing the structures and the talent and the abilities of other sportsmen and women and young boys and girls in the country that played a multitude of other sports, in terms of the economy with the attraction of tourists and fans to the game and to the stadiums from all over the world,
the rise of sports tourism. Now there's, of course, the Legends League that is being played in Sri Lanka at the moment. So the knock-on benefits has been really tangible, and it has a very, very strong social and community connect. And I don't see it any differently in terms of India. The Royals especially have had a very, very proud brief over the years. We've not only tried to win the IPL, which in the inaugural season in 2008 under the late great Shane Warne, what the Rajasthan Royals did, but it has a very firm idea of wanting not just to produce the best cricketers for the Rajasthan Royals, be it from Rajasthan or elsewhere, but also to produce the best cricketers for India. And you can see the benefit of the hard work, the structures, the infrastructure that the Royals have put in place with the likes of Yashasvi Jaiswal, with the likes of Dhruv Jurel, Sanju Samson, so on and so forth. The names are many that are holding their own on the international stage. And in terms of the talent that Rajasthan has produced, you have the likes of Deepak Chaha, Ravi Bishnoi, you have Dishant Yagnik, already part of a player, but also now part of our coaching team. What we can afford, what we can actually give back to Rajasthan in terms of our expertise is talent identification, the opening of the Royals Academy with Pankaj Singh, the bringing of knowledge, coaching expertise, nutrition, strength and conditioning, physiotherapy, and of course data and analytics to really understand where the talent is, who that talent is, how to develop them, and to understand that for the Royals, for the development of the skill is as important as the development of the person and the player. So we have a really deep focus in the state, a really strong focus on the national Indian side, and a strong focus on trying to do well and win the IPL as well. So those are the benefits that I see in terms of Rajasthan. And of course with Sheila Devi and Jyoti Devi here, recipients of assistance from the Royals Rajasthan Foundation, there's also a strong community give back. So I think it's a wonderful privilege for me to be part of the Royals and to see all the great work they do. And of course, very grateful for your support as well, sir. Thank you. Minister, would you like to comment on this? Because I think this is subject. सबसे पहले तो मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा कि कुमार ने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल सही लिया। राज्यवर्धन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से श्रीलंका में जयवर्धन ऐसे क्रिकेटर्स भी रहे हैं। बट ही स्पॉट ऑन। देखिए मैं आपको हकीकत में एक आपको बताता हूँ कि जब मैं क्लास 9th में था तो मैं डेनिस लिली की किताब थी द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो मेरे लिए एक धार्मिक ग्रंथ की तरह होता था। और उसमें डेनिस लिली कहते थे कि जब मैं स्कूल में, वो अपने लिए बोलते थे, जब मैं स्कूल में था तो किताबों के साथ अपने जूते भी साथ में लेके जाता था। और वही मैंने करा, ब्रेक होता था जब लंच का स्कूल का, तो मैं अपने शूज पहन के स्टेडियम के चक्कर लगाता था, रनिंग करता था। तो यू गेट मोटिवेटेड। सो व्हेन यू सी प्लेयर्स like Kumar and the top players like Jaiswal and everybody playing right in front of you, इतने नजदीक से जब आपको देखते हैं, उनको ट्रेनिंग करते यहाँ पे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच का प्रेशर हैंडल करते हुए देखते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं जीवन के अंदर। और केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में हर क्षेत्र में चैंपियन बनना एक अनुशासन, एक कमिटमेंट और एक प्रैक्टिस से ही आता है। और वो प्रैक्टिस वो खेल के मैदान से सीखते हैं। सो हमारे लिए भी बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि इतनी शानदार अंतर्राष्ट्रीय लेवल की टीम और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मेंटर्स राजस्थान में आ रहे हैं और हमारे युवा खिलाड़ियों को उनको देखने का मौका मिलेगा। Jake, we've heard there's a special announcement you want to make. Straight on to the announcement. Well, firstly, it's lovely to be here with everyone, and we're incredibly excited for the IPL in the weeks ahead. I think echoing what Kumar and Colonel Rathore said about the impact of IPL on the state of Rajasthan and more broadly India.
I think the only times in March and April that the hotels across are completely sold out are either auspicious days for weddings or the IPL match weekends. So I think we're trying to bring that buzz and energy here, but most importantly, it's the development ecosystem. We've got high-performance centres around the country. We want to bring all of those learnings to Rajasthan, to have more Rajasthan players playing for the Rajasthan Royals in the future. Now, more broadly, IPL is about the fans and it's about the people we can impact. We're privileged to have the position to impact millions of people around India through this platform. And some of the people we're able to impact are here in rural Jaipur, rural Rajasthan, through our foundation. And over the last few years, we've looked to create an ecosystem that anyone can replicate across the country, using solar, using water, using upskilling, to enable these incredible women, some of which are here with us today, to transform these communities. And today we have a special announcement, which is the fact we're going to be having a special impact match to celebrate the women of Rajasthan and broader India against RCB on April 6th. We have some jerseys here which are all pink to again celebrate these women because here, orate to barate. And I think it's a fantastic slogan that the foundation live by. I think the impact that they've made in Rajasthan is really, really significant. And over the years to come, we want to build it bigger and bigger to impact more and more communities. So I think we've got an AV that we're going to show that will share a little bit more about the impact we're trying to have with the foundation. राम राम सा, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं indianairforce की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्ञान कुमारी चौधरी है, मैं गांव भगवतपुरा से हूँ। मेरा नाम मन्नी देवी है, मैं indianairforce से हूँ। एक पढ़ी लिखी महिला हूँ मैं, फिर भी इतना नहीं बोल पाती थी, इतना नहीं जुड़ पाती थी लोगों से। पहले घर के अंदर ही रहते थे, कोई बात में ना हमारी सुन पाता था, ना हम सुना पाते थे किसी को। हमारे पास में कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई व्यवस्था थी। आपने बहुत कुछ किया है, पौधे दिए थे हमें, खेजड़ी के, नींबू के, अनार के, बेर के। ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में कि हम भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मेरा सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और गांव में आके बड़ा हॉस्पिटल खोले और गांव की हेल्प करे। रोड के ऊपर जैसे रात में अगर कोई महिला निकल रही है तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि महिलाएं आराम से आ जा सकें। ये रहा मन्नी देवी। ये मेरे लिए सरप्राइज था। नाम देखा, हाँ अपनी महिलाओं के नाम है, बहुत खुशी हुई। फिर उसमें जैसे सबके नाम दिखे तो मैंने मेरा नाम ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ है। फिर मुझे मेरा नाम जब मिला तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। बहुत अच्छा असर होगा कि हमारा नाम इतना ऊंचा तक जाए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ वो आपकी बार तो जीत जाए और भगवान से ये प्रार्थना करूंगी हमेशा। वो खेल रहे हैं तो मतलब इस स्तर पर वो कैसे पहुंचे, ताकि हम भी हमारे बच्चों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जरूर। And now to introduce some of the heroes whose names are on those jerseys and have inspired the Royals to go all pink again. So I would like to invite Jyoti ji, Sheila ji, Sanju ji and
Sheila ji are from our they are from our Access to Water project, wherein they are, please come up, wherein they are water warriors and they have changed the water situation there by getting farm ponds and moving towards sustainable agriculture. And Pooja Devi and Sanju Devi are currently training to become solar engineers, and they're going to go back and electrify 100 houses in their villages. So I'm happy to have our heroes on stage with us. Request Honorable Minister to present the jerseys to them. Can we request everyone to join and after the last jersey presentation? शीला जी आप उस साइड चले जाइए. Before we move on, there's a special invitation from the Honorable Minister and the Royals for the empowered women. आप लोग please stage पे रहिए. We're waiting for the pink. So a final gesture from our side, and we'd love Colonel Rathore and Kumar to provide these, is a royal pink pass, a VIP pass to our fantastic women here for our match against RCB on April 6th. This pink pass is the first invitation which is being exclusively presented to the women for whom the team is playing. We want these women, along with the women of Rajasthan and of India, to watch the game with us together. Now, any questions and answers, or should we close? I think you all don't have much questions. Which one? Support? We are planning also तो राजस्थान स्पोर्ट्स के साथ हम लोग एक MOU साइन करने जा रहा हूँ. वो MOU
स्पोर्ट्स हम लोग सोच रहे हैं वही डेवलप करेगा। तो ये छोटा भी है, मैं सोचता हूँ करीब हर डिस्ट्रिक्ट को ये इम्पैक्ट ऐसा करूँ। वी हैव टू गिव द सीड एंड वी थिंक विद दैट सीड we'll be able to grow it. This with the sports ministry हम लोग कोशिश कर रहा हूँ ये जितना तुरंत हो उतना ये IPL का टाइम भी अगर लॉन्च हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। इसमें MOU साइन करेंगे। मिनिस्टर जी आप बताइए, यू गाइड अस सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि आप जितना खेल के बारे में या खेल संस्थाओं के बारे में जानते हैं शायद ही कोई और इतना जानता हो। क्या कारण है कि राजस्थान के खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहे? उसकी जड़ तक जाना या समझना वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना खेलों को बढ़ावा दिया है उतना शायद ही आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। चाहे फिट इंडिया का आह्वान हो, बार बार उसको याद दिलाना हो, चाहे खेलो इंडिया शुरू करना हो, और खेलो इंडिया के अंदर हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होना, एक ऐसी उम्र में जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता नॉर्मली, अब उन 1000 खिलाड़ियों को हर साल जो जिनका चयन होता है उनको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलते रहना। और हाल ही में जो निर्णय हुआ, मुझे लगता है उससे भी आप पूरी तरह से अवगत होंगे कि खेलो इंडिया के अंदर जो पदक जीतेंगे उनको सरकारी नौकरियों के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के साथ साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करना, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर, और जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर, मैं देख चुका हूं दुनिया को, इसीलिए बोल रहा हूं, आप भले रिसर्च कर लो इसके अंदर पूरी कि कितने देश हैं जो इस तरह का समर्थन देते हैं जितना आज खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम में दिया जा रहा है। आप उन देशों को अपनी उंगलियों पे गिन सकेंगे और उसमें भारत है। इस तरह का समर्थन दिया जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, एक विजन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होनी चाहिए, नीति अच्छी होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तो 100% यहां के नौजवानों के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हम ओलंपिक पदक या अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर भारत की क्रिकेट टीम हो या एथलेटिक्स की टीम हो, हम कहीं पे भी राजस्थान पीछे रहे, कोई कारण नहीं। हम अब उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी खेलों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अभी हमारा वास्ता क्रिकेट से हुआ है, तो क्रिकेट से जब एक रिलेशनशिप हुई है, मैं रंजीत बार ठाकुर साहब से पहली बार मिला हूं, ये भी मुझसे पहली बार ही मिले। यहां आईपीएल हमेशा होता था, एक बार भी मैंने कहीं पास नहीं मांगा किसी। अपने स्वाभिमान से जीता हूं और स्वाभिमान से जीऊंगा हमेशा। लेकिन राजस्थान का खेल, राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान की जनता और राजस्थान की मिट्टी से धोखा और उससे कोई डील नहीं हो सकती। तो अगर आईपीएल यहां हो रहा है तो आईपीएल पूरी तरह से राजस्थान के खेलों को पूरे दिल से समर्थन करने को तैयार है। अभी आचार संहिता लगने वाली है और हमारा समझौता अभी हुआ है। आपको भी बोर्ड के पास जाना है, बोर्ड से क्लियरेंस लेनी है, आखिर ये कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, तो इनका जो निर्णय होगा वो भी आपके पास जल्द आएगा। लेकिन तब तक आचार संहिता लग जाएगी तो मेरे को साथ में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप निर्णय सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा कदम हम उठाएंगे एक बड़े विजन के साथ में। और केवल यही नहीं, राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू, सीएसआर सब मिलकर हम राजस्थान के खेलों को एक ऐसा स्वरूप देंगे जो आज तक नहीं हुआ था। और ये केवल एक पे बैक है राजस्थान को, जिम्मेदारी हमारी मिली है, ये हमारा पे बैक है राजस्थान को, राजस्थान के खिलाड़ियों को। कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इतने ख्याति प्राप्त क्रिकेटर हमारे साथ में आए हुए हैं,
ये हर बार आते थे, लेकिन इस बार हम इनका भरपूर फायदा उठाएंगे और इनकी नॉलेज हमारे खिलाड़ियों को मिले, ऐसी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरा तो कोई लेवल ही नहीं था, लेकिन उस समय भी हम ये जानते थे कि कहाँ बैठकर गेम को देखना है, फिर स्विंग होती हुई दिखेगी, पिच कहाँ हो रही है, बैट्समैन को बीट कैसे करना है, वो सब देखना चाहते थे उस समय तो इतने सारे टेलीविजन भी नहीं होते थे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा क्रिकेटर है उनको स्टेडियम के अंदर ऐसा स्थान मिले जहां से वो पूरा गेम देख सके और गेम देखकर उसको समझ सके, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलें। थैंक यू सर। अभी ओपनिंग द फ्लोर टू एनी क्वेश्चन। हिंदी में बोल सकता हूँ 1 2 3 4 ओके गो फॉर इट। Good evening, everyone. My question is for Rathore sir. Sir, what do you think is the right way to fix, quote unquote, the spoiled Rajasthan Cricket Association? Can I actually, it's a difficult thing. We don't want to fix either us or the minister in sport. And I don't think the BCCI actually runs Rajasthan Cricket Association, so they will be the appropriate people to actually answer that question. However, if the minister wants to react, happy to do it. मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा दिया है, वो अभूतपूर्व है। मैं बीसीसीआई की लीडरशिप को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने एक क्रिकेट के कंडक्ट के अंदर, आईपीएल के कंडक्ट के अंदर एक फ्रेशनेस लाने की कोशिश करी और वो जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार को दी, जिसके अंदर भजनलाल जी ने क्लियर कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जो दर्शक हैं वो भरपूर आनंद ले सकें क्रिकेट का। उसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमारी बातचीत चल रही थी रंजीत जी से, तो हमारे प्रश्न इस तरह के थे कि आप स्टॉल्स कितनी लगाते हैं, फूड स्टॉल्स कितनी लगाते हैं, फूड स्टॉल्स में भीड़ कितनी होती है, भीड़ ज्यादा होती है तो स्टॉल्स को डबल करिए, फूड की क्वालिटी कैसी होगी, पानी की व्यवस्था कैसी होगी, टॉयलेट की व्यवस्था कैसी होगी, टॉयलेट साफ कैसे रहेंगे। ये सब चर्चाएं हमने करी हैं ताकि आप आम जनता क्रिकेट को खूब एंजॉय कर सके। पार्किंग कितनी दूर होगी, पार्किंग से जाने की व्यवस्था क्या होगी, ये सारी चीजें हमने तय करी हैं, और इसीलिए ताकि क्रिकेट का कंडक्ट, यहाँ पे आईपीएल का कंडक्ट बहुत बढ़िया हो और साधारण जनता और क्रिकेटर्स और हर खेल प्रेमी को आनंद आए। सर, देखा कि हमने पिछले मैचेस हमारे जितने भी आईपीएल के हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में लगातार मैच जीतती गई थी, लेकिन किनारे पे पहुंच करके जिस तरीके से लगता था कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो डिप्रेशन में है, तो क्या इस बार उनके डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या मेडिटेशन, योग या ऐसी कुछ यहाँ पर होना चाहिए ताकि राजस्थान रॉयल्स की जो लगातार उम्मीदें हैं वो कमजोर ना हो, तो उसको लेकर के किस तरीके से ठोस रणनीति रहेगी? मैं ये एक्सपर्ट लोग को दे देता हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन टू से व्हाट विल वी डू टू मेक श्योर दैट द हेल्थ, वेल्थ एंड द पावर ऑफ द राजस्थान रॉयल्स टीम इज एज वेल इन द बिगिनिंग एंड वी collapse. So are we going to do wellness? What are we going to do? So that's the reason. I think we focus holistically on the entire person as we go through the IPL. It's not just about worrying about how they train, it's also about whether they get proper nutrition, proper rest, proper sleep, proper mental health support, sports psychologist support, performance, mental performance support. So we address all of it. Unfortunately, in IPL cricket, it's always volatile, and it's not just the Royals, but every team goes through this incredible journey, somewhat like a roller coaster at times. And you will find that sides that don't win at the start sometimes might make a big comeback later on. Sides that start off like a freight train slow down. So it is up to us as support staff and the players
to build a strong enough relationship and understanding of how to recognize those moments and to come up with solutions that help us to keep our momentum going and to keep winning. Cricket, unfortunately and unfortunately, because if you're a fan, it's amazing to see those close games that turn on a dime, but that's what cricket is. And you can have results go either way, but hopefully we'll be able to manage our pace much better this season. Thank you. बाला ठाकुर जी से मेरा क्वेश्चन है सर, राजस्थान में जैसे संगकारा ने कहा कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, रवि बिश्नोई हैं, दीपक चाहर हैं, राहुल चाहर हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान की टीम है, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ी उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात तो सही है। प्रॉब्लम that we have is that this is all India franchise. This franchise happens to be having the name Rajasthan here. If you look at any franchise, other than cricket playing states like Baroda, Bombay, Bangalore, Chennai, Delhi, Rajasthan was never a big cricket playing state. So whatever jitna हुआ ना, ये अभी last 15 years में हुआ। उसका पहले भी हनुमान सिंह जी सोचता है होना चाहिए। रवि बिश्नोई was a net bowler, so he started with us actually. So that is not entirely true that we have not done it. Even Deepak Chahal has to come and practice with us. That is also not true that we have not supported them. The question is we are not getting enough. Maybe we are not focused on the talent hunting. So some part of the fault is ours. But we make a commitment to you in the next 5 years, at least there should be 5 to 7 players in the IPL from Rajasthan, bowlers and all that. इसका वजह से मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक high powered academy खोलो। अभी we offered this 3 years ago, but it was not done. So again we are offering it to the government has to do it. The government has to support us like they have done in Nagpur, like they have done in Guwahati. The government has given us everything to come and train the players. That's their sports ministry's investment. We will invest along with the sports ministry to see that we have at least minimum 5 to 7. I'm saying actually why can't there be 10 players? There will be 10 teams someday. So they have one player for each team. It's not a difficult task, you know. So I think we should, your height is good. You're good looking guys, boss. So just relax, Rajasthani people. You should play. Okay? Good evening. My question is for Kumar Nagari. The respected sports minister, sir, just recently announced that Kumar will mentor the Rajasthan cricket team. So how do you look at the opportunity to mentor the Rajasthan Ranji cricket team? Through our associations and through our in Rajasthan, we represent Rajasthan. So not just the Ranji teams, but also young cricketers who come up, who come spend time with us. If we have an academy here, through the academy work, through the experts that we send, we can offer much more than just mentoring services to the cricket community of Rajasthan. So any opportunity to impact and give back to the sport that I have played and has given me so much is always an incredible opportunity. So we will take advantage of any chance that comes up for us to influence for the better the cricketers of Rajasthan. My question is to Kumar. With Prasid Krishna's injury, is the team looking for in-house options or planning to bring in a replacement? Currently, we have our full stock of overseas players in the squad, and Prasid Krishna is a huge and tremendous loss. He's an exceptional cricketer. He's playing for India. He's got great skill, and it's a big loss for all of us. We, of course, are very much in touch with all of our players, especially Prasid, supporting him through this very difficult time. He was in the UK for surgery as well. So we will wait and see, assess the options that we will have,
coming with us now in terms of the start of the season. Once we have a very good look at the options that are out there, we get eyes on them, then we can make a better informed decision. So more often than not, we'll be looking first for a local option, because once your overseas quota is full, you have to go local, and I'm sure there is more than enough ability and talent left on the reserve list for us to make a very good decision. So we're excited to see who can fill those shoes or do a similar job, and it might be a very exciting opportunity for another cricketer. पिछला बकाया है आरसीए से, उसका भी इससे हो जाएगा, इससे तय हो जाएगा। मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपको पता है कि बकाया है, और बहुत सारा बकाया है, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि हो जाएगा क्या उससे। देखिए, आरसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो दे नहीं रखा आरआर को, राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनका हिस्सा वो दे दे, है ना। ये तो फ्रेश है, अभी से आगे जो होगा वो वाले रिश्ता है। जो पीछे वाला है वो तो किताबों में हमेशा रहेगा। देखिए, कोई विटनेस कभी हॉस्टाइल बन सकता है, लेकिन किताब कभी हॉस्टाइल नहीं बन सकती ना, जो खाते में लिखा हुआ है, ठीक है ना। Okay, thank you all. This tea and join us for tea and high tea actually. Look forward to meeting you. Thank you all. Thank you, Kumar. Thank you, Minister. What